with the body contemplation, just as you practice with the Anapanasati, placing the awareness in one area again and again. At first it can seem a little difficult, the mind won't stay, but as you persist consistently, just as you become skilled at observing the breath in just one area, then with having the intention and making the effort and doing it repeatedly, with body contemplation, the mind will rest with the perception, for example, of teeth, just teeth, and be broadly aware of the in and out breathing. And then when one can stabilize that kind of practice, then you imagine it disintegrating, dissolving, and then being nothing left. And this chips away at the habit of grasping at a body as being a self. One man just asked, with regard to emotions, how do we train in there's a lot of energy, a lot of identification, and how do we train ourselves to not identify with the emotions when it's so this is where the long sitting sessions are very helpful, because you'll notice them change and cease. So if you're very happy about something, or upset about something, or worried about something, at a certain point the mind we're identified with it. And if you just pay attention to the way it changes, subsides, and then ceases, falls away from the mind, seeing the impermanence. If you can see impermanence very, very clearly, the moment that a mind state ceases, an emotion ceases, then you will see not self as well. It's good mindfulness sees the three characteristics, not self-impermanence, not self-unsatisfactoriness. But we tend to train in trying to focus on one. But when you see one very, very clearly, Tan Ajahn Anan explains that you will see the other two. Because when the quality of mindfulness is good, it's noticing the truth. It's truth discerning awareness. So in seeing in seeing impermanence, one also sees not self, unsatisfactory, and then the mind rests in a spacious experience of empty of self, but full of clarity and the knowing nature of mind. I've had some experience of that myself, of seeing impermanence very clearly, and then a feeling of being a self, of falling away from the body and mind for a period of time. And the body is still there, sense contact is still there, but no feeling of being a self or identifying. And but did anybody become a little bit peaceful? Considering bones, teeth, nails? Some heads nodding, very good. Madhyarpan is not valid, so I'll shoot for him. Seek your permission for that. Yeah. Arpan got the Bodh Gaya blessing. A flu. Auntie's going to translate. बंते जी ने बताया कि पूछ रहे थे हमसे शुरू में कि क्या हम लोग अपना ध्यान एक एक अंग पे रख पा रहे थे, जैसे सिर्फ दांत पे ध्यान रखने को कहा,
दंता बात कही तो क्या हम उस पर रख पा रहे थे, और कहें कि अगर इस तरह से करते हैं और हमारा ध्यान स्टेबलाइज हो जाता है तो उसके बाद फिर हम विजुलाइज कर सकते हैं कि वो जो हार्ड दांत है वो टूट रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है। ऐसा करने से हमारी जो उपादान की आदत है, ग्रास्प करने की आदत है, वो कम होने लगती है, और जो उससे हमारे उसमें तादात्म्य बनाते हैं उस शरीर के माध्यम से इमोशंस राइज होते हैं, पेन दर्द होता है, बेचैनी होती है, तो उसको देखने से हमें से जो है एक चित्त में संस्कार जागता है, इमोशन जागता है, और फिर धीरे धीरे वो कम हो जाता है, और उससे हमारा उसके प्रति जो तादात्म्य है वो कम होने लगता है, और ये स्पष्ट दिखने लगता है। जो अनात्म है, अनित्य है, दुख है, अनात्म है, उसका भाव स्पष्ट आने महसूस होने लगता है। और अगर हम इन तीनों लक्षणों में से एक भी ठीक से देख पाए, बहुत गहराई से देख पाए, तो बाकी भी स्पष्ट मालूम पड़ने लगते हैं। और बंते जी बता रहे थे कि उनका अपने अनुभव है कि ऐसा करने से उनको भी बीच में ऐसी स्थिति आती है कि वो शरीर और मन से तादात्म्य छूटने लगता है, और अनात्म भाव जो है उसमें प्रकट होने लगता है। तो ये अपने अनुभव से जानते हैं कि इस तरह से बॉडी कंटेम्पलेशन, कायानुपश्यना करने से हमारा जो चित्त है वो तादात्म्य जो है शरीर के प्रति और मन के प्रति कम होने लगता है। Because I sometimes like using these, what you call malas. I have one made of amber and Baltic amber. And Baltic amber is between 50 and 80 million years old. And sometimes holding that in my hand, and I just do some contemplation. How many births and deaths in 50 million years? And where is the earth element from the bones of those bodies? And if you can do your contemplation outside of the formal practice, it becomes more real. So outside of formal practice, we're considering, contemplating, reflecting, and then when you come to the formal practice, you do it in a more disciplined, focused way. The original Asokan images, very old, and the Gupta images. And you think, how many generations of Buddhists, when something's from 2,300 years old, another's from 1,500 years old, another from 900 years ago, and the Pala images. And you consider how many generations of Buddhists have come and gone, come and gone, come and gone, how many births and deaths, how many bodies. And it really is the case that sometimes when we're walking on this earth, where we may be stepping on the dust of what was once our bones. And I think there was an occasion in the sutta, somebody asked the Buddha, I think they went to Vulture's Peak and are trying to find a place where nobody had died, and I think the Buddha answered, even you have died here many times before. So there's been a lot of birth and death. And we can consider in these ways, and it makes our awareness of impermanence and awareness of elements and more real. This is a panya sanya, wisdom perceptions, that support the having a closer look in the formal meditation. अजान बता रहे हैं कि जो ये माला इस्तेमाल करते हैं, उनमें एक बार उनके पास एक माला है जो बाल्टिक एम्बर की है, जो 5 करोड़ 8 करोड़ वर्ष पुराना है। तो कई बार वो कॉन्टेम्पलेट करते हैं, विचार करते हैं कि इतने समय में कितने जन्म और मृत्यु के दृष्टांत हो गए, और उतने समय में जो हमारे धातु थी शरीर के हड्डियों के, वो कहाँ पहुँचे, क्या उनका परिस्थिति रही होगी। तो हमारे
क्वेश्चन पर ध्यान करने के समय के बगैर भी बाकी समय भी इस तरह का चिंतन करने से, कंटेम्पलेशन करने से काफी लाभ होता है। तो बताते हैं, इसीलिए मुझे म्यूजियम में जाना बहुत अच्छा लगता है, जहाँ वहाँ पे अलग अलग तरह की मूर्तियां हैं, गंधार मूर्तियां हैं जो 2300 वर्ष पूरी है, अशोकन पीरियड की, गुप्तन पीरियड की मूर्तियां हैं। तो हम सोचते हैं कि कितने जनरेशन्स हो गई जबकि ये मूर्तियां बनी, और कितने जनरेशन्स भगवान के बुद्धों के हुए होंगे, कितने मेरे जन्म और मृत्यु हुए होंगे इतने समय में। अब एक दृष्टांत बताते हैं कि एक सूत्र में भी दृष्टांत आता है कि कुछ भिक्षु भगवान से पूछते हैं कि हम ऐसी जगह ढूंढना चाहते हैं जहाँ कोई न मरा हो। तो भगवान उन्हें कहते हैं कि कोई भी ऐसी स्थिति नहीं आओगे जहाँ पे तुम भी पिछले जन्म में न मरे हो, तो ऐसा ढूंढना तो असंभव है। तो ऐसे इस तरह के चिंतन हमारे साधना में भी हमको मदद करते हैं। जो धातु है, धातु मनसिकार बम वाला, वो सब उसके अंदर वो मदद करते हैं। और ये पन्या संज्ञा इसको कहा कि जो प्रज्ञा है उसकी संज्ञा जागती है और वो हमारी प्रज्ञा बढ़ाने में मदद करती है। कोई क्वेश्चन है? अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो आजान से प्रश्न पूछ सकते हैं। वो माइक ले लें, माइक लेके प्रश्न पूछ लें। Even ask questions now. Hello. So I've been practicing body contemplation on and off for a little bit, and one time it got pretty powerful, I'd say, and I felt like a strong nibbida, like kind of disgust, and I just remembered about the one sutta where a bunch of monks like killed themselves. Right. So like I'm wondering, is there a balance to that? Or? Yeah, I said that earlier today. You have to do metta practice as well. And the Anapanasati is for after that occasion, Lord Buddha taught the Anapanasati Sutta again. So he taught the Anapanasati Sutta in Savatthi, and he taught it another time after that occasion, after the monks killed themselves. So yeah, if you just do body contemplation without practices for tranquility and for well-being, it can lead to a sense of disgust. And but this, what we were doing now, wasn't loathsomeness of the body. That's when you start contemplating bloated corpses and maggots. In the mind, when you look at nice clean white bones, there's more of a sense of detachment, and there's more of an earth element contemplation. So आपने प्रश्न पूछा कि कई बार इस तरह की साधना करने से निब्बिदा का बहुत भाव जागता है, और उन्होंने सूत्र में पढ़ा है कि एक बार इस तरह से साधना करते हुए कुछ भिक्षुओं ने आत्महत्या कर ली थी। तो भगवान अंते जी ने, आजान ने जवाब दिया कि हाँ ऐसा हुआ था, तो वो मेत्ता प्रैक्टिस भी इसके साथ करनी चाहिए। और दृष्टांत बता रहे हैं कि एक बार आनापान सती का सूत्र पर भगवान ने एक बार दोबारा दिया था, जबकि पहली बार सावत्थी में दिया था। तो जिस तरह की बॉडी कंटेम्पलेशन करने से पहले मन को शांत करना आवश्यक है, ट्रैंक्विलिटी होनी चाहिए। और वो बताते हैं कि वो जो प्रैक्टिस थी वो अशुभ प्रैक्टिस थी, जिसमें कि जो मृत शरीर है उसके विभिन्न डिजेनरेशन की स्टेट्स में देख रहे थे, तो उससे बहुत ज़्यादा डिस्गस्ट पैदा होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि ऐसा करने से पहले चित्त हमारा काफ़ी समर्थ में स्थापित होना चाहिए, काफ़ी ट्रैंक्विलिटी होनी चाहिए, उसके बाद ही ऐसी भावना करते हैं। लेकिन अगर हम एक हड्डियों को, पड़े हुए हड्डियाँ देखते हैं और उसके बारे में चिंतन करते हैं, तो उससे सामान्य था। So I have a question. When we try to generate determination or virya, the only way I could do that is by in reinforcing atta, and then on the other hand we have to do a anatta bhava also. So how do we balance both of these? Because determination can only come from strengthening atta. So I think it can. So it doesn't. I'm not sure if it strengthens atta. Basically, there is atta.
I think we have to accept there is a self that's functioning. So if you're not being diligent, you have a lazy self. So you're still being a self. You're being a lazy self watching TV and playing with your phone. So sleeping in or whatever it is. So that's there. And then you have to kick your lazy self in the butt. And that's just the way it is. And so when you do these wise reflections, you are the conventional being that thinks you're a self that's going to have to receive the karma of the things that you do, unless you uproot self-view and liberate yourself from it. Next life you will feel like a self, even though the body will be different, personality slightly different, you'll be feeling like a self. So we do have to use the conventions, we have to work with what we have. But the thing about arousing urgency is you will do more of the practices that lead to the insight into not self. So we do have to work with it, and which is why I think metta for oneself is a good foundation. Because if we really care, then we won't be heedless. We want to take care of our situation. So we have to indulge an acceptance of conventional reality. We have to work with it. And then when we see the dangers of being stuck within conventional reality, then we'll be diligent sowing the causes to go beyond it. आपने प्रश्न पूछा कि जब हम वीर्य जगाने की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग एनर्जी जगाने की बात करते हैं, तो अत्ता के माध्यम से होता है, तो उससे अत्ता भाव अधिक पुष्ट होने की संभावना रहती है. तो कैसे वीर्य जगाया जाए? तो आजान ने जवाब दिया कि हमको एक एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम जो भासमान सत्य है उसके हिसाब से तो, और जो कन्वेंशनलिज्म हमारी रियलिटी है, हम अत्ता भाव है. अब वो एक आलस्यमयी अत्ता भाव रहेगा कि ऊर्जामयी अत्ता भाव रहेगा, ये हम पे निर्भर करता है. ये और जो एक योनिसो मनसिकार की बात बताते हैं, वाइज रिफ्लेक्शन की, तो उससे उसके आधार पर डिपेंड करेगा कि हम किस तरह के कर्म करेंगे. अगला जन्म भी होगा तो उसमें भी अत्ता भाव रहेगा, लेकिन वो किस तरह का उसका असर होगा वो आज हम कैसे काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा. और हम कन्वेंशनल रियलिटी को भी जुटरा नहीं सकते, हमको उसके साथ काम करना है. इसलिए कहा कि मेत्ता का भाव रखें साथ साथ काम करते हुए. और ये अधिक जितना भी हम कंटेम्पलेशन इस पे डेंजर्स पे करेंगे, आदिनावत ज्ञान की ओर बात करेंगे, तो उससे हमको सेंस ऑफ अर्जेंसी जागेगी. तो वो सेंस ऑफ अर्जेंसी धर्म के आधार पर जाग रही है और वो अत्ता भाव के आधार पर नहीं जाग रही. तो उसको हम ठीक से समझ सकते हैं. Okay, it's okay with me. So 2 questions. First, what would you recommend to a person who is just beginning? So it's I think not even a year that I started. So whatever I'm doing on my own really, by reading books and all. So I do come across obstacles and I'm not able to understand what to do. Just keep at it, and somehow or the other I'm able to understand something sometimes. Mostly no. That's the first thing. Second, especially when I hear people criticizing me, and having a lot of unpleasant emotions around, creates a lot of strong anger. Yeah. Even at times when I don't give in and I try to suppress as much as I can, the external situations kind of go out of control sometimes, and I seem to get pulled. So I think those 2 questions are related. Right. My practice is not so strong, and I find myself in those situations, especially in the family context. So what do I do? So how long do you sit? How long is your normal session? 20 minutes of sitting, breath, and 10 minutes of walking. And I do chanting as well in English. Okay, because so
So if you can increase your sitting to 45 minutes and the first 15 minutes is metta, 15 minutes of metta practice, and you can establish the goodwill for this conventional being, may I be well, may I be happy, may I be well, may I be happy, and then you can include some other people, some teachers, some relatives, people that it's easy to have metta for. You just establish that goodwill and then generate the clarity. And then so when you're in a situation where other people have negative, intense emotions, then you on your feet, you go to having metta to yourself as well. If you're not getting goodwill and well-being, wishes of well-being from others, you can generate it for yourself, and that will help you to be less reactive. It's like, this is an important thing that we need to learn, is that we don't need to be loved by others if we know how to take care of our own minds. But it's a muscle that needs to be strengthened through repetition, and it can become very strong. So it's like, I don't care if you have ill will for me, I you realize that the practice has been working in ways that you didn't realize in you. And it's like, oh look, that's improved. Well, I understand how not to suffer in that way now. I understand not to do this. I understand I should do more of that. And it kind of seeps in mysterious ways. But basically the consistency. And if you can increase the sitting a little bit more and start it with the metta. Yeah. It's a human situation somewhere between heaven and hell. There's usually painful bits, complexities of relationships, karma. We don't want to make more bad karma. So, yeah. आपने प्रश्न पूछा था कि मैं अभी कुछ ही समय से साधना कर रहा हूँ और अपने आप ही करता हूँ, कुछ पुस्तकें पढ़ के, और साधना करने में कहीं दिक्कत आती है। और एक उसका उदाहरण उन्होंने दिया कि जब मेरे को लोग क्रिटिसाइज करते हैं तो बहुत अनप्लेजेंट इमोशन आते हैं, गुस्सा भी जाता है, कई बार मैं उसको रोकने की कोशिश करता हूँ लेकिन कई बार रिएक्शन भी हो जाता है। तो बंदे ने जवाब दिया कि आप कितना ध्यान करते हैं, तो उन्होंने बताया 20 मिनट बैठ के 10 मिनट वॉकिंग और फिर चैंटिंग ये करता हूँ। तो अजान ने कहा कि उसको अगर आप बढ़ा सकें तो बहुत अच्छा रहेगा, 45 मिनट करें और पहले 15 मिनट मेत्ता भावना का अभ्यास करें। और जो अगर दूसरी तरफ से दूसरे लोगों से हमारे को वेलबींग नहीं आ रही, मैत्री का भाव नहीं आ रहा, तो हम अपनी तरफ से अपने आप को मैत्री का भाव दे सकते हैं। तो हमको ये समझना चाहिए कि हमको आवश्यक नहीं है कि हम सब लोग हमको मैत्री का भाव ही रखें, हमारे प्रति हमसे प्यार ही करें। हमको अपने स्वयं का ध्यान रखना सीखना चाहिए कि हम किस तरह से अपने प्रति एक विषम परिस्थिति में रहते हुए अपने प्रति कैसे हम मैत्री का भाव रखें। और जो सामान्य मैत्री की बात की जाती है कि जब मैत्री का भाव करें तो पहले अपने लिए, फिर उनके लिए जो आपके मित्र हैं, जिनको आप उनके प्रति अच्छी भावना है, तो इस तरह से करने से मैत्री का जो बल है वो बढ़ने लगता है। और फिर ऐसी स्थिति आती है कि हम अपना ठीक से ख्याल रख पाते हैं। मुख्यतः बात उन्होंने कही कि हमको धैर्य रखने की आवश्यकता है, और फिर जितना धैर्य रखेंगे उसके बाद में हमको ऐसा भी आता है, मालूम पड़ता है कि हमें लग रहा था कि हमें बहुत बेचैनी हो रही है, लेकिन जो भी हम अभ्यास कर रहे हैं धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि उसका लाभ हो रहा है। और सामान्यतः अधिकतर लोग स्वर्ग और नरक के बीच में ही रहते हैं, तो हमारे कर्मों का फल है हमारे, लेकिन हम अगर अपने कर्म सुधारेंगे तो भविष्य जरूर अच्छा होगा। I'd just like to add with the metta practice, because also what the gentleman in the back was saying about reaffirming self-view, or making that when we wish ourselves well, may I be happy. It's important to understand that when metta practice gets strong and powerful, that's the beginning. May I be well, may I be happy. May all beings be well, may all beings be happy. When loving kindness meditation is very bright and very powerful, the perception of self and other falls away, and then it's just pure metta. It's just a mind that's radiating loving kindness, and there's not much of a sense of self and other in that expansive, bright state. So I think this is one of the reasons Lord Buddha recommended the Brahma Viharas, is there
mind states that lead to samadhi, hindrances falling away, and identification with the body and thoughts falling away. So it starts with a conventional self and other, but the utter wholesome nature of it as a meditation object. It starts as an attitude and emotion and thoughts, but it becomes a very bright type of samadhi that then supports the development of insight. So आगे और स्पष्टीकरण देते हुए बताते हैं कि कई बार हमको जैसे अभी एक भाव आया था कि मैत्री का भाव करने से कहीं हम मत्ता भाव तो नहीं पुष्ट कर रहे हैं, लेकिन जब मैत्री का भाव बहुत पुष्ट हो जाता है तो चित्त इतना रेडियंट हो जाता है, इतना स्पष्ट हो जाता है कि उसमें अत्ता भाव कम हो जाता है. इसलिए भगवान ने ब्रह्म विहारों की साधना करने का महत्व बताया कि उसका करने से हमारे मन की स्थितियां ऐसी अच्छी हो जाती हैं कि समाधि का भाव स्वतः ही पुष्ट हो जाता है, और फिर जो अपने से जो एक अत्ता भाव होता है वो स्वतः अपने आप ही ड्रॉप हो जाता है, वो कम हो जाता है. चित्त जितना जितना हमारा चित्त स्पष्ट होगा, सजग होगा और ही मैत्री का अभ्यास करने से अत्ता भाव भी कम हो जाता है. There is an online question by Darpan Majumdar. He says, how can we improve our practice of reflection? Also, reflection and contemplation are the same thing? Similar. So as I was saying, outside of the meditation posture, one can reflect more broadly and more creatively. Like, for example, you go to the museum and you consider how many generations passed since that Buddha statue was carved, or you look at old trees and you look at the leaves and see the way that the trees returning to the earth even as it grows, it's losing its leaves, the leaves are becoming earth element. So when we've got our eyes open and we're wandering around, we notice nature, the laws of nature, and consider when it comes to the meditation, we're doing it within more circumscribed parameters. So you're just going to look at the earth element nature of hair, and look at the earth element nature of teeth, earth element nature of bones, and so you're having a closer look. When in terms of how do you improve, you just do it a lot. So that would mean taking more quiet time to be reflective, and less time in socializing and being. So whenever you go to see a movie, for example, or watch a movie on TV or online, that the whole thing is all self. There's the hero, there's the villain, there's the falling in love, it's all these strong characters which are very much think that they're selves. And so when we allow that into the mind, reaffirms these habits. But if you spend time alone, but in our tradition, the monks, there used to be a lot more forest in Thailand. The monks would go wandering in the forest. And it's just very interesting to see what happens. For myself, I've spent time practicing in an area of jungle for 2 or 3 months on 7 occasions when I was a younger monk. And when you're alone in the forest, there's a very interesting thing happens to the mind, because there's nothing there that's interested in your opinion. There's nothing there that's interested in your preference. And the mosquitoes and the leeches, they just see you as food. And it does something very interesting to the way we hold the body and the mind. And walking on the earth with bare feet, bathing in a stream with the stones under your feet and the water on you, you see the body as elements, and opinions, preferences, politics, all of that becomes much quieter. So spending time in nature is a very good time, a very good way to become more honest and realistic about what a body is, and spending less time socializing. And I think in India you probably have big families. You have spending time with the family. I was recently in Malaysia, and Chinese Malaysians have big families and lots of family events.
But if we can spend more time alone, and not distract ourselves, the mind will naturally become reflective. And but repetition, familiarization, reading Dhamma teachings, and read the Dhamma teachings of reflective individuals like Ajahn Sumedho and Ajahn Sucitto, extremely reflective bhikkhus. If you read their Dhamma talks, you become familiar with the ways they reflect on experience. And आपने प्रश्न पूछा कि ये हम अपना रिफ्लेक्शन जो है जिसको कहते हैं वो किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, और क्या रिफ्लेक्शन और कंटेम्पलेशन जो आप कह रहे हैं क्या वो एक ही चीज़ है? बंते जी ने उत्तर दिया कि जो एक जैसी ही है। कुशन से जब हम फॉर्मल सिटिंग में बैठ के ध्यान कर रहे हैं तो हमारा मन एकाग्रत कुछ चीज़ों पे रहता है, लेकिन जब हम बाहर ध्यान फॉर्मल ध्यान में नहीं है, बाहर के कुशन से बाहर हैं, तो हर चीज़ हमारा ध्यान, हर जो भी चीज़ भी हमारे जिसके ऊपर भी ध्यान जाता है वो हमारे को रिफ्लेक्शन का आलम्बन दे सकती है। जैसे उन्होंने बताया कि म्यूजियम में जाके बुद्धा स्टैचू देखना या पेड़ के पत्थर नीचे गिरते हुए देखना और पृथ्वी में मिलते हुए देखना, तो खुली आंख भी हम अगर प्रकृति को स्टडी करते हैं तो उससे भी काफ़ी कंटेम्पलेशन हो सकता है। अगर हम ज़्यादा समय सोशलाइजिंग में या जैसे टीवी देखने का उन्होंने उदाहरण दिया उसमें लगाते हैं तो वो सब अत्ता भाव ही पुष्ट करता है, क्योंकि वहाँ पे सब करेक्टर में अत्ता भाव बहुत स्ट्रांग होता है और सोशलाइजेशन में भी ऐसा ही रहता है। तो उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि थाई फॉरेस्ट ट्रेडिशन में जो भिक्षु लोग हैं वो एकांत में जंगलों में भी कई समय रहते हैं। वो अपना बता रहे थे कि 2-2, 3-3 महीने में 7 बार अभी तक रहा हूँ। तो वहाँ जाके एक बड़ी अजीब चीज़ होती है कि हमारा, क्योंकि किसी भी चीज़ के ऊपर हम ध्यान इंटरेस्ट नहीं होता, किसी की चीज़ के प्रति आसक्ति नहीं होती, तो वहाँ पे एक सिक्लूजन में रहते हुए नदी में नहाते हुए जो स्पष्ट लगता है कि शरीर और जो प्रकृति है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। मच्छर हैं उनके लिए हमारा शरीर तो एक भोजन की जैसा ही है, और जो हमारे ओपिनियंस हैं, प्रेफरेंस हैं, पॉलिटिक्स है, वो सब चीज़ें छूट जाती हैं अपने आप ही, और शरीर के प्रति जो कायानु का जो चिंतन है, रिफ्लेक्शन है, वो अपने आप स्पष्ट बढ़ जाता है। वो बता रहे थे कि भारतवर्ष में भी जैसे उन्होंने मलेशिया में देखा बहुत बड़ी फैमिलीज होती हैं तो बहुत समय उसमें बीतता है। तो कह रहे थे कि अगर हम कुछ समय एकांत में वास करें, एकांत में रहें और देखें, प्रकृति को देखें, पुस्तकें पढ़ें, प्रवचन सुने, खासतौर पे ऐसे लोगों के प्रवचन जो बहुत रिफ्लेक्टिव हैं। उन्होंने उदाहरण दिया अजान सुमेधो, अजान सुचित्तो के प्रवचन सुनेंगे तो उनमें आपको काफ़ी रिफ्लेक्ट करना पड़ता है, तो उससे भी हमारी रिफ्लेक्शन की एबिलिटी बढ़ती है। Could you describe the process from more like course metta meditation to more like strong? Right. Like at what point do you kind of drop the thinking? Right. So I think many people in the very beginning stages have to practice with a sense of being blocked and not feeling anything. That's quite common. And but yet simply to have the intention to have a pure quality of love, an unconditional quality of love, is already very powerful. And so one should trust that this is something that we all can do, and be committed. I would recommend the first 10 or 15 minutes of a meditation. That's what my teacher suggested to me. I remember when I was in my second rainy season retreat, I was practicing very hard and I was getting some good results. But after those good results, some very good results, but after those results, the next day I would often be grumpy or brittle. And I would feel disheartened, because as if having you're 19, I think at the time I was 23, and basically I wanted to be enlightened by the end of the week, you know. I tend to have a bit of impatience, the young, youthful passions. So I remember, and so all of the energy that was going into trying to become enlightened, trying to see devas, trying to get jhanas, all of that. When the next day
the amount of bhava, in a way, bhava craving, like becoming energy. So if ever we allow any of the craving energies to swell up in the mind, it will go into the other types of craving. So if you allow a lot of sensual craving, it will become irritation. And it's just there's a certain amount of tanha in the system, craving. So all of that, I want to become enlightened energy, became I can't stand this place for another second energy. And so with the chores, the way the Thai monks practiced the chores in those days was we all had to do it together. So Westerners tend to like some privacy, some time alone, and so Thais tend to like to do things in groups. And so we all had to go and clean the one building at the same time. And we all had to then sweep the leaves around that building at the same time. And then we all had to go down to another building and sweep the leaves, and had to clean the building together. And I don't know how many times I thought, why doesn't some monks sweep and some monks clean and some, Westerners who kind of want to come up with a system that works. And that's actually how they do it now. It did change, but in those days we had to do it all together, and I was so frustrated. And then we had to wait for a cup of tea, and I just wanted my cup of tea. And had to wait for a couple of monks who were cleaning the Ajahns Kuti. That's a different team. The monks that cleaned the Ajahns Kuti got to do the Ajahns Kuti, but they took a very long time. And I was so fed up with everyone and everything that I actually lifted up we have this kind of simple robe that we wear underneath. I pulled it over my face, and I was just meditating in the middle of the Dhamma hall with this cloth over my face, because I didn't want to see anyone, didn't want to talk to anybody. And all the Thai monks are looking at me like I was very strange. And there were only 2 Western monks in Ajahn Anan's monastery at that time. And anyway, I think I gave up on the idea of having a drink, and I left the Dhamma hall. And I walked up the hill alone. So very interestingly, when I got to the top of the hill, Ajahn Anan was standing in the road, and looked. And he looked at me and he said, "In 5 years, it's better." And I'm like, and then he said, "In 10 years, it'll be even better." I went, oh. And it was a very, very frustrating yet perfect teaching. And he said, "What you're doing, Ajahn Achalo, is like you have this container of water with dirt at the bottom, and you're hitting it so hard, you're able to get good results, but you're also stirring up the sediment from the bottom." So he said, what you need to be doing at this stage is a lot of effort with a lot of patience and less willfulness. So willfulness is coming from that strong sense of self. And he said, so I encourage you to begin your meditation with loving kindness practice for the first 10 minutes. And because I'm not an aversive anger type, I'm more of a classic greed type. But because when we get grumpy, we get very grumpy. And then the other thing he said was, and you need to contemplate not self hundreds of times, thousands of times, tens of thousands of times. And so basically he was giving me the strategy for what's going to work in the long run, and with consistency. So, but I talked to many people who are practicing metta in the beginning, and there's just sometimes a feeling of numbness, a feeling of I can't do it. And but the pure intention chips away at that, and the effort, and you will have moments where you feel very warm, loving feeling in the heart, and then that's metta. And then once you've cultivated it to that capacity, you get a sense for it. You're able to expand that, relax that, and grow that, and then you're able to then radiate it out. And so if you're able to hold, it starts as an intention, and then repeated thoughts, and then it becomes a type of samadhi. It's so wholesome, it can become an absorption. So then the hindrances, you'll notice just thinking is less and less and less, and that you don't have to
generate may I be well, may I be happy, may I be happy. There's just a very strong feeling of loving energy that's radiating outwards. So like anything, so repetition and discipline, you get good results. अपना प्रश्न मेत्ता भावना के प्रैक्टिस के साथ था। तो उन्होंने बताया अजान ने कि शुरू में दिक्कतें आती हैं और हम लेकिन हमको विश्वास हो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो धीरे धीरे हमारी जो रेपिटेशन करते हैं, बार बार उसको दोहराते हैं और एक इंटेंशन बना के रखते हैं, तो उससे धीरे धीरे हमारा चित्त जो है उसकी तरफ झुकना शुरू कर देता है। तो अपना उदाहरण बता रहे थे कि मेरी जब दूसरी रिट्रीट कर रहा था वहाँ, तो उसके बाद ही मुझे काफ़ी अच्छे उसके परिणाम आ रहे थे, लेकिन उसके तुरंत बाद ही मन बहुत उदास हो गया, बेचैन हो गया और मैं बहुत अधीर हो गया था कि मुझे बस एक आध हफ्ते में ही अनलाइटन होना है और सारे ध्यान और देवता और एनलाइटनमेंट सब हो जाना चाहिए इसी एक आध हफ्ते के अंदर ही। और ऐसा नहीं हुआ, तो ये जो भवतनाज आ गई, तो इसके आधार पे जब बढ़ता गया तो वो दूसरी डायरेक्शन में चला गया और मुझे ऐसी स्थिति हो गई कि मुझे लगा कि मुझे यहाँ एक सेक्शन भी नहीं रहना चाहिए। लेकिन फिर वहाँ पे मोनास्ट्री में जो काम करने होते हैं, वर्किंग करनी होती है, तो वहाँ पे ट्रेडिशन है कि सब लोग इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। तो वो मैं चाहता था कि मुझे एकांत हो और बार यही विचार आता था क्यों नहीं हम अलग अलग काम बांट लेते और सबको मिलकर एक जात करने की क्या जरूरत है। और धीरे धीरे मन इतना बेचैन हो गया था कि मैं जाके चाय का समय हो गया, मैंने चाय वगैरह कुछ नहीं पी और मैं जाके हॉल में अपना चेहरा ढक के, अपनी जो अंतर्वस्त्र चीवर है उससे चेहरा ढक के बैठ गया था। और मैं जब वहाँ से जाके वहाँ जो ही एक छोटी पहाड़ी है उसके टॉप पे चला गया वहाँ जाके और देखा कि वहाँ पे अजान आनन पहले ही थे, जैसे लगा जैसे वो शायद मुझे एक्सपेक्ट ही कर रहे थे। और उनसे मैंने कहा कि कब मुझे कुछ आगे बढ़ोतरी होगी, मेरी प्रगति होगी। तो उन्होंने कहा और मैं आई फील बेटर, मुझे अच्छा लगेगा। तो उन्होंने बड़े आराम से कहा कि 5 साल में थोड़ा और अच्छा लगने लगेगा और 10 साल में और थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मुझे काफ़ी लगा कि तो बड़ा लंबा काम है। तो उन्होंने समझाया कि मैं जो बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा हूँ उससे जो जैसे एक तालाब में नीचे गंदगी और उसको बार बार हैमर करें तो गंदगी उठ के आती है। तो इस कारण से मुझे पेशेंस से काम करना चाहिए और मेत्ता भावना का ज़्यादा अभ्यास करना चाहिए। तो वो अपना बता रहे थे कि मेरी पर्सनालिटी टाइप ऐसा नहीं है जो एंगर का टाइप है, लेकिन जो लोभ प्रवृत्ति है अगर उसमें भी उस व्यवधान आता है तो उसका रिवर्स जो है ग्रम्पीनेस और एंगर ही होता है। तो बार बार अभ्यास करने से, एक अच्छा इंटेंशन बनाने से ऐसी परिस्थिति आने लगती है कि हमारा चित्त में मैत्री का स्वतः ही प्रस्फुटन होता है और हम फिर मैत्री को बाहर, मैत्री भावना को बाहर भी फैला सकते हैं। तो संक्षेप में यही बात बताई कि अपना इंटेंशन हो करने का और उसको बार बार अभ्यास करें और फिर इस हद तक हम आगे बढ़ सकते हैं कि समाधि जो मेत्ता भावना के आधार पे ही ध्यान का भी अब्जॉर्प्शन भी महसूस हो सकता है। Too much talking and thinking isn't good either. तो अभी थोड़ा गाइडेड